Hello. Good evening, everyone. Am I audible? If someone can message. Okay. Hello, everyone. My name is Junaid Ahmed. I got AIR third in UPSC 2018 CSE exam. I have 30 minutes. So what we'll do is I'll speak for some 15-20 minutes, and I cannot take many questions here. So I'll try to take as many questions जितना time permit करेगा. तो last 5-10 minutes में I'll take some questions of yours. So in the starting, I'll speak for say 15-20 minutes. So basically, my topic is this cracking it amidst all odds. So the thing about UPSC is people feel about this exam that this exam is very tough, and people who are very good in academics, they can only achieve success in this exam. So I want to share my experience of this exam and what all I did to get success in this exam. So I started my preparation in 2014. I completed my graduation in that year, and then I decided that I'll go for civil services. So struggle ka I've told a lot of times how I prepared और ये सारी चीजें. So today I'm not going to speak on that because field में आने के बाद now I'm in Bareilly, so my district training is going on. So field में आने के बाद I've realized कि struggle सबका होता है. Everyone goes through a struggle phase जिसका जैसा struggle होता है सबका एक अपना type का होता है. So I'm not going to speak on that. I'll speak more about this exam, what this exam is. For me, see, I'm a person who is not very talented. कभी मुझे ऐसा नहीं बोला गया कि you have this talent, you can do this, you can do that. So I feel मेरे लिए talent word exist नहीं करता है. मेरे लिए जो word exist करता है that is hard work. So for me, talent, hard work, वो सारी चीजें एक ही उसमें combine हो जाती हैं. So when I started, many people said that ये exam clear करना, it's a very difficult task. You don't have good academics, so you cannot clear this exam. But I decided that I'll go for this exam. So hard work is the only thing which I had. I said to myself कि I'll give my 100% जितना भी हो सकेगा. So मैंने क्या किया कि मैंने अपना टाइम डिसाइड किया. मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है. सो फर्स्ट थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज इफ समवन फील्स कि वो उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा नहीं है या उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो टैलेंटेड नहीं है तो वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, उसको ये फील है, तो ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू डू जेन्युइन हार्ड वर्क, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम. दिस आई फाउंड आउट इस एग्जाम को लेके. So the second thing of this exam is patience, and I feel patience is important in every aspect of life. कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आप कुछ करना चाहते हो, patience बहुत important role play करता है. For example, जैसे I feel कि हर एक इंसान अपने एक टाइम जोन में रहता है. कोई बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, कोई किसी को बहुत टाइम लग जाता है सक्सेस लेने में. तो अगर मैं एग्जाम्पल्स दूँ, आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे. ज़करबर्ग या स्टीव जॉब्स, उन्होंने बहुत अर्ली एज में सक्सेस पा लिया. और एक आपके पास ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत लेट एज में उनको सक्सेस मिला. अगर आप एग्जाम्पल्स लेना चाहें, अब्राहम लिंकन, 60 से पहले उनको कोई जानता भी नहीं था. उनका पॉलिटिकल करियर ही उसके बाद से स्टार्ट हुआ था. और भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सक्सेस बहुत लेट में मिली. अगर जैक मा का देखेंगे, अलीबाबा के फाउंडर, वो भी 35 के बाद ही स्टार्टेड हिज कंपनी. सो आई फील एवरीवन इज इन हिज और हर ओन टाइम जोन, जो कि वो अपने पेस के साथ चलता है. तो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसको इस एज में ही हैज गॉट अ जॉब, ही इज इनटू सर्विस, या ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स और मैंने कुछ अचीव नहीं किया. मे बी लाइफ ने आपके लिए कुछ बेटर रखा हो आगे चल के. तो कभी भी उस चीज़ को इस वे में नहीं देखना चाहिए कि अपनी लाइफ को आप किसी दूसरे से कंपेयर करने लगे. अपने टाइम जोन को आप अपने हिसाब से जीना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. एंड इस एग्जाम का भी ऐसे ही मैंने फील किया है कि कोई ये एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, कोई किसी को बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं क्लियर करने में. सो दिस पेशेंस थिंग ना, जस्ट हैव दिस थिंग अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है. एंड द थर्ड थिंग विच आई फील इज परसिवरेंस. वो ऑब्वियसली वो चाहिए होता है, क्योंकि
मैंने तो ये फील किया है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हुआ था, एंड देन सेकंड अटेम्प्ट में भी मेंस नहीं हुआ था, थर्ड में इंटरव्यू नहीं हुआ था, फोर्थ में रैंक आई थी बट आई डिडंट गेट आईएएस, फिफ्थ में फाइनली आई गॉट आईएएस। सो छोटे छोटे स्टेप्स पे मैं फेल हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप अपने आप को कैसे होल्ड करते हो, दैट मैटर्स। सो परसिवरेंस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। एंड आई कैन टेल यू, जो फेलियर्स होते हैं जितने भी आप एग्जाम को लेके हो या ओके तो लेके हो, दैट एग्जाम को लेके हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन हाउ यू सी दोज फेलियर्स। सो समवन इज सेइंग दैट आई शुड स्पीक in English, so I'll try to keep it maximum in English, because many students will be there from South India and other places who can't understand Hindi. But if you are in administration and you speak regularly Hindi, so वो mix up आ जाता है. So I'll try के I'll speak in English most of the time. So the third thing is perseverance. So three things I've said: hard work, patience, and perseverance. I feel if a person has all these three things, he can definitely clear this exam, no matter from what background he is coming or how talented he is, he can clear this exam. And one more thing about this exam is what I feel is the starting. That is the most difficult part. Most of the confusion you will have in the starting of this exam: how to prepare, how to start, what all books you have to read, what test series you need to join. So these all kind of things will come up in the starting, and that is the most difficult part. Not only for this exam, for everything, whatever you do in life. So I say, don't fear of that beginning. Just make a push, and if you start, half the battle is won. That I can say. When I started, I didn't have any experience about this exam. I मैं लिटरली बताऊं, आई जस्ट टुक अ बैग एंड मैं राजेंद्र नगर चला गया था. आई डिडंट हैव एनी रूम, नथिंग, कुछ नहीं था वहाँ पे. एंड आई जस्ट लैंडेड अप देयर, और पूरी रात में एक रूम वहाँ पे देखा, कैसे करके आई गॉट अ रूम एंड देन आई सेटल डाउन देयर. सो इफ यू डिसाइड समथिंग, गिव इट अ पुश, गिव इट अ स्टार्ट. all the other things will fall in line. This is about this exam and everything else. So this is one more important thing which I wanted to share with all the students here. And one more thing about this exam is what I feel is what is important is your personal growth. I'll say, don't look at this exam just as an exam or for the sake of clearing this exam. There is some element of your studies which will help you in your personal growth. So look at this exam with that perspective. See, whatever you are studying, whether it is history, geography, current affairs, or anything, there is a part of your personality which is growing, and that helps you a lot. So enjoy this phase of your personal growth. Don't take it as a burden that you have to study this much, you have to cover these many subjects. So if you will just change your perspective about things, a lot of things will fall in line. That's what I believe about personal growth. And personal growth ke related, to I'll say ke even if you achieve anything in life and you're not working on your personal growth, na, your life will become very dull. Suppose I'm here, for example, I've cleared IAS, and then here after coming in the district, I feel that the normal work is very mundane. You see the files, you see the developmental work and everything. So there is an element of personal growth which I feel should happen regularly. Kabhi pe bhi. So I've started learning guitar, and I started reading more books, and I've thought that I'll do masters from somewhere in economy or some other subject which I feel I'm interested in. So these elements of personal growth should continue always, kabhi bhi aapki life mein. They should not stop. That is very important. So against all odds, if abhi tak ke liye, I'll summarize this first slide, what all I have said. For this exam, you should do hard work. That's what I feel is the most important part. You should have patience. Just remember that every person is in his or her time zone. Wait for your time to come. Aisa nahi hai, this is not the case that if you are failing, that then you cannot get success. Obviously, if you are failing, then you are learning, and it's a learning curve, and you'll get something bigger. And the third is perseverance. No matter how many times you fail, it is important how you get up
That's how life is. So for this exam, these three things are the most important thing, and then the starting of anything about this exam or any work you're doing, that is the most difficult part. If you just take a leave, then all the things will fall in line, that I can tell you. So never ever fear of this thing, that if you have any idea, if you have anything in your mind, just start with that thing. And now people are saying that speak in Hindi. I'm just reading the comments here. So I'll keep it in a mix of English and Hindi so that all the students who are there, they can understand. And the third thing which I talked about is personal growth. That is very important. Always have this thing in mind. पर्सनल ग्रोथ इज समथिंग जो कि आपको हमेशा आगे लेके जाएगा. स्टडीज के अलावा भी यू शुड हैव हॉबीज, यू शुड हैव थिंग्स व्हिच यू लव, एंड अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन करते रहना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम. सो अभी आई एम ऑन द फील्ड. सी आई हैव जॉइंड एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इन बरेली एंड आई एम ऑन द फील्ड. सो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं या जो मैंने इस एग्जाम से सीखी हैं, विच I wanted to share with you. So the second slide is about what I feel is what qualities a successful person has, a successful entrepreneur, yeah, a successful aspirant who has cleared this exam, or anyone जो भी life में successful हुआ है, उसमें कुछ qualities I feel हमेशा होती हैं. The first one is that he is original. Original means that he doesn't accept status quoism. Status quoism is चीजें जैसी चल रही हैं उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना. आप हमेशा किसी भी जगह जाएंगे तो एक सिस्टम कंटिन्यू रहता है. आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, either you accept that or either you take a step to change that. So you have this option. So I believe a person who is not a status quoist, who is a non-conformist. Non-conformist is who doesn't conform to the basic ideas of society, basic ideas of a system कि ये चीजें ऐसे ही होती हैं. He becomes very successful. That's what I believe. आप किसी भी successful entrepreneur या किसी भी एक इंसान की अगर autobiography या चीजें पढ़ेंगे, you'll see this element that he's original in his ideas. He has this thing of challenging status quoism. And the second thing which I believe to be a successful person is discipline. That is the most important aspect. And I can tell you, discipline is something like an inertia. You are disciplined in some aspect of life that will force you to be disciplined in certain other facets of your life. So start with very basic things. आप घर में रहते हैं तो making up your bed, making up your things, that's the first thing that you can do when you're leaving home. Yeah, you're doing things. तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो डिसिप्लिन को एक इनर्शिया की तरह ट्रीट करती हैं. एक के बाद एक ये चीजें आती हैं. सो इट इज अबाउट एग्जाम ऑल्सो. इफ यू आर डिसिप्लिन इन योर स्टडीज, योर लाइफ विल बी डिसिप्लिन. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. सो दिस द सेकंड थिंग व्हिच a successful person has according to me. And the third quality which I feel is very important, and in field also I see this thing, that being humble with people and forgiveness. That is quality which most of the people don't have. They lack in this thing. So I believe that a person who is humble, who has this quality of forgiveness, he goes way ahead of other people who don't have these qualities. So people remember those. You are a public servant. People remember those bureaucrats who have these kind of qualities. So for any successful person, I believe they should have these qualities in themselves. So the time is very less, so I'm rushing it up because I have to take some questions also. In the last 10 minutes, I'll take some questions from you people. I know I cannot take many questions, but जो भी मुझे सामने आएगा, I'll try to answer those questions. So the next slide is about what experience I had in these last 2 months when I'm on the field. मैं जाता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, and when I was in the academy, when I had not cleared this exam, I had different perceptions about how things work, या चीजें किस तरह से होती हैं. And when I'm on the field, I see things in a different way. And this is applicable to every field, every aspect of life.
The first thing which I see is leadership. Leadership is something, कोई भी system है, a leader is someone जो कि system को active करता है. And believe me, your subordinates copy you. अगर आप active हैं, आप you are the one who can back them up, you are the one who can show them a vision, then they'll be more efficient. And if a person is there sitting on a chair जो स्टेटस कोइस्ट है या एक्टिव नहीं है, तो उनका स्टाफ या सबऑर्डिनेट्स भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं. सो इफ यू वांट टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, देन यू हैव टू गिव देम a visionary leadership, these kind of things. Then only you can expect the best out of them. So the first thing is leadership. Second thing, and the most important, which I feel, is people are not able to differentiate between position and status. Believe me, position is something which you have because of your job. For example, you are an IAS, you have the authority, you have the powers of doing things. That is your position, you can do that. And status is something that comes out of respect and admiration, that I believe. So if you have a position and you don't have a status in the society, then there comes a backlash, and this happens most of the time. And so you can see in every aspect of life, you'll see people who have this status, who have this respect, who have this admiration in among the people. They can utilize their position, authority in a very good manner. So this is very important. And the third thing is, on the field which I saw, is change. What every person thinks that he'll bring change in the society. So what happens when you start a particular thing, there will be many hurdles, and when a failure comes in, मैंने भी जैसे मैं I start a project and then many failures comes in, and I think that मतलब अब क्या, कैसे मैंने इतनी मेहनत करी इस प्रोजेक्ट के लिए, and then it is not coming up, तो ये क्या हो सकता है. So I believe that change is something, अगर आप एक पर्सन की लाइफ में 1 घंटे के लिए भी ला सकते हो, you should be proud of that thing. Never ever think that अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर सके या तो आप छोटा भी नहीं कर सकते. So that extent of change, that is very important. So the fourth thing which I experienced in on the field is ground reality. It's very different, and believe me, sitting in office, everything looks so pretty, so good, that everything is okay. But when you are on the field, when you see things with your own eyes, there is a lot of difference between these two things. So you have a lot of scope to work, you can change a lot of things. So, and fifth thing about this job, so much decision making at a very young age. I'm on the field, and I can tell you, no job in this world could give you so much of decision making power at such young age. You just enter the system and you have so much of financial and administrative power. So no job in the world can give you this much power. So if you are into this job, believe me, you have a lot to work. And in the last, I'll say that satisfaction. I mean, whatever you do, if you are into this civil service, I can tell you that when you come back, and if you have done good to the people, you'll be very satisfied with your job. Every time, if I'm sitting in my block, there are people who come with their problems, that I don't have a house, I don't have this thing, I don't have this thing. अगर आप एक को भी उस दिन resolve कर देते हो ना, you come satisfied कि आपने कुछ काम अच्छा किया है. So level of satisfaction which you get in this service, that is unparalleled. आपको that satisfaction you cannot get. Someone is asking about inflated egos. I'll say something about it also, because कहना तो नहीं चाहिए, because अभी तो you are aspirants and you don't know how the system works, but still जो मैंने experience करा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था. Inflated egos is like when you are into the system और आप कुछ achieve कर लेते हो, तो you start feeling that I'm above him, I'm above her, या मैं ये चीज मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मेरी पोजीशन ये है, मेरी पोजीशन वो है. अल्टीमेटली क्या होता है, दिस क्लैश ऑफ ईगोस कम्स इन, एंड वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है. सो आई बिलीव दैट फ्रॉम every single person who is into government service, in fact I'll say in a private service also, every single person, the ultimate aim is transforming the lives of people. And even if you are a secretary, and if you are a person who is at the very bottom in the administrative scale, it doesn't matter. I believe, I think that
everyone has this job to transform lives of people, so they should work in collaboration with each other. ये inflated egos जो होते हैं, these should not come. That's what I believe. And when you people will crack this exam and when you'll come into service, you'll see how these things work. And my final words, already 20 minutes हो चुके हैं, तो my final words for you, trust me, job and work, everything वो चलता रहता है, but your personal growth, your personal life matters a lot. If you don't have a very healthy balance of personal and professional life, you cannot do justice to any of them. So trust me, spend time with family and friends in COVID times. All ये तो और ज़्यादा important हो जाता है. जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे आप बना के रखनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ वेरी गुड पर्सनल लाइफ, यू कैन डू very good in professional life if you can balance it out. Second thing is, do what you love. These are my final words to all of you. See, UPSC preparation is one part of life. This is not life, total life नहीं है. ठीक है, you are preparing for this exam, it's very good, but never ever give up on those things which you love. That will carry your life forward. That is very important. And service of people, this is the third thing. My final word, in my final words, that the most important thing is service of people. Ultimate aim of your life should be service of people. Believe me, if you'll make this your goal, then you'll go miles in your career, in your life. And the fourth thing is, be humble. मैंने आपको पहले भी बोल दिया, that is very important. अगर आप humble होते हो, trust me, मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ. मेरे ऑफिस में मैं किसी को भी बुला के अपने साथ बैठा के जब बात करता हूँ, व्हेन आई ओपन अप विद दोस पीपल, तब वो जाके मुझे सारी चीज़ें बताते हैं. मेरे ऑफिस में कोई क्लर्क है, कोई भी लेवल का ऑफिसर से मैं उसको बुला के उससे इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ सारी चीज़ें. व्हेन दे बिलीव कि हाँ हम लोग इनसे शेयर कर सकते हैं, तब दे ओपन अप विद थिंग्स. तब आपको जो इंसाइट मिलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी हम्बल विद एवरीवन. जो अपनी पोजीशन है उसका अच्छे से यूज करना चाहिए, जिस भी आप पोजीशन पे हो. और लास्टली आई विल से, मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरा एक ड्रीम है कि व्हेन आई टर्न 60 or when I'm 65 and I look back at life, I should have memories which I can cherish for lifetime. Believe me, इस लाइफ की भागा दौड़ी में, एग्जाम की भागा दौड़ी में अपनी लाइफ को कभी मिस मत करना. Do what you love. That's what my principle of life is. And make memories. और वो memories आपके work से, आपकी personal life से बनती है. And believe me, this journey of civil services, when you are preparing, this is the most beautiful part. Make memories of this journey. आज भी when I'm sitting here, the most beautiful memories I have of my past life up to 29 years, यहाँ तक जब तक मैं हो गया, वो मेरी preparation के हैं. What all I did during my preparation. So just love this phase of preparation. It's a very beautiful journey, and when you will be onto this side, you'll see how things change, or how you'll be able to cherish this thing. So it's 23 minutes. Thank you very much for everyone for a patient hearing, and thank you Unacademy जिन्होंने ये सारी चीजें plan की. So we have 8 minutes we have. I'll take some questions. जो भी है क्वेश्चन पूछना है, यू कैन पुट अप, और मैं जिसका भी आंसर हो सकेगा, आई ट्राई टू आंसर. It's very fast, so I'm not able to read. How to motivate yourself, Ritika, or someone is asking how to motivate yourself. See, एग्जाम में ये चीज़ें रहती हैं कि प्रेशर होता है बहुत सारी चीज़ों का, आप फेल करते हो अलग अलग स्टेप्स पे. मोटिवेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गिव्स कॉन्फिडेंस टू यू. एक अच्छी कंपनी होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग, योर हॉबी और थिंग्स यू लव टू डू, वो आपका प्रेशर हटाती हैं. तो ये 2-3 चीज़ें आप हमेशा रखें. एंड हॉबीज़ ना आपको हमेशा काम करेगी. मेरी कोई हॉबी नहीं थी यार. मैंने अब जाके मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं, बिकॉज लाइफ में वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रात में अकेले में आके बैठता हूँ तो मुझे लगता है यार कुछ तो होना चाहिए जो वर्क कर सके, वो कर सके. और इनफैक्ट आपके तो एग्जाम में पूछा जाता है यार, हॉबीज़ का पूरा एक सेक्शन होता है, तो अभी से आप बना लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. Stress, many people are asking about stress management, mental consistency, and all these things.
दिस इज वेरी कॉमन, बिलीव मी। एक स्ट्रेस एक पर्टिकुलर लेवल तक इज गुड, वो आपको पुश करता है अच्छा करने के लिए, बट हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस और वो डिमोटिवेशन जो आता है लाइफ में, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वही चीज़ें, उसके साथ साथ ये आपको रखना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? आई ऑलवेज से दैट फाइंड आउट दैट वाई क्यों बनना चाहते हो। अगर आपको वो रीज़न मिल जाएगा ना, तो वो सारी चीज़ें खुद ब खुद खत्म होने लगती है। आई फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, बट द ओनली क्वेश्चन विच आई आस्क्ड टू माई सेल्फ वॉज why I'm giving so much to this thing, why I want to become an IAS, and the answer I used to get is this thing, that the service of people is something which I like the best, and that is something where I can get satisfaction from. So मुझे ठीक है, एक फेलियर के बाद एक डिसहार्टनिंग फेस आता है, आप सेटबैक लगता है, बट आप रिकवर करते हो अगर आपका ये चीज़ आपके साथ रहती है। And someone is saying share your experience or your memories of Labasna. I don't know who this was, Chetna or something, Nitesh Yadav, वो बहुत जल्दी स्क्रॉल हो रहा है। तो लबासना इज अ वेरी गुड अकेडमी। आई से आप अब देखो, आप क्या होता है ना, आप प्रिपेयर करते हो 2-3 साल एंड यू आर अंडर so much of stress and everything, and then you directly go to Masuri hills and like beautiful academy है there, you have a group of 180 people जो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से फील करते हैं कि सब डिजर्व करते हैं बनना। सो वहाँ का एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, बट वो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको होता है। बट उसे भी एक मोटिवेशनल फैक्टर रख सकते हो आप कि when you're feeling low, you just put up a picture of Labasna in front of you and say that I want to reach there and I want to see things there. So that can be a motivational factor for you. Next question, minimum study hours. Someone is asking about minimum study hours. Someone is saying, Miraj Khan is saying, where are you posted? I'm in Bareilly currently. मेरी district training चल रही है, so I'll be here for 1 year, and 1 year के बाद I'll go back to Labasna. Optional subject के regarding, many people are asking how to choose optional. I'll say optional subject का, someone is asking about minimum study hour. So these two questions I'll answer. Trust me, there's nothing called as minimum study hours required for this exam. I believe it depends on individual to individual. If someone says that I've studied for 16 hours, 17 hours, मत सुनो उसकी. It's upon your capability. आप कितना पढ़ सकते हो, कितना productive time utilize कर सकते हो. मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैंने स्टार्टिंग में 10-12 आवर्स पढ़ा था जब मैं अपना बेस कवर अप कर रहा था, बट उसके बाद से 6-7 आवर्स 8 आवर्स इफ यू स्टडी एंड यू आर गिविंग इट इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो चीज़ें। तो मिनिमम स्टडी आवर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, डोंट लुक इनटू दिस थिंग। और जितने मिथ्स है ना यूपीएससी के, निकाल दो दिमाग से। ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि मिनिमम स्टडी आवर्स चाहिए, एकेडमिक्स में आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए और आपका ये होना चाहिए, वो होना, ये जितने मिथ्स हैं यूपीएससी को लेके वो सब निकाल दो दिमाग से। आई कैन से दैट इफ आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, एनी ऑफ यू हु इज लिसनिंग टू माय लेक्चर कैन क्रैक दिस एग्जाम। So myths हटा दो and be confident that you can clear this exam, provided what I said you do. Hard work, patience, perseverance, these 3 things I believe a person should have if he wants to clear this exam. हिंदी मीडियम्स के बारे में कुछ बताएं, one person is asking. So you see हिंदी मीडियम्स का लोगों को लगता है कि ग्राफ कुछ नीचे जा रहा है, बट आई बिलीव पहले क्या होता था कि हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे ना, वो ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे एग्जाम, तो उनका सिलेक्शन रेशियो जो होता था वो भी ज़्यादा होता था। तो ट्रस्ट मी, ऐसा कोई बायस या कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम को मार्क्स नहीं मिलते हैं या कुछ नहीं मिलते हैं। आई हैव पीपल who have got 160 plus marks in essay हिंदी मीडियम में, और जीएस में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको देखते हो। हाँ, थोड़ा सा कंटेंट का इशू होता है हिंदी मीडियम में, क्योंकि आजकल की जितनी भी बुकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हिंदी मीडियम का इतना कंटेंट हो नहीं पाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है। बट वो सब एक्सक्यूजेज होते हैं। आई बिलीव if you want to do something, you'll get ways to do it. That's what I believe in. Someone is saying I saw your percentage in 10th 12th and this thing. मैंने बहुत जगह बोला है, तो मैंने फिर वही स्ट्रगल वाला चीज़ मैं दोबारा मैंने इसलिए रिपीट नहीं करी, क्योंकि जब मैं फील्ड पे आया ना, तो आई सॉ कि हर एक इंसान का अपना स्ट्रगल है। देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड जिसका उसका स्ट्रगल नहीं हो। तो आप अपना स्ट्रगल शो करते हो, तो मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने स्ट्रगल किया है, सब ने किया है स्ट्रगल। सो 10th 12th में इफ आई हैव गॉट लेस परसेंटेज, 12th में आई गॉट 60%, 11th में तो 40
243% थी, 10th में 60% थी। तो मतलब ठीक है, मैंने भी स्ट्रगल किया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब दूसरे इंसान ने स्ट्रगल नहीं करा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। फील्ड पे तो मैं जाता हूँ यार, मैंने तो पढ़ाई का था, आई गॉट एवरीथिंग। मुझे फाइनेंशियल बैकिंग थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था, बट मैं लोगों के घर पे आज ब्लॉक में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि लोग खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब राशन कार्ड के लिए आप सोच सकते हैं कितना प्रॉब्लम होती है गरीब इंसान को बनवाने में। उनका स्ट्रगल पूरी लाइफ इसी में चली जाती है कि मुझे राशन मिल जाए और राशन कार्ड मिल जाए। सो उस टाइम के बाद ना, जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हो तो आपको वो स्ट्रगल बहुत छोटा लगने लग जाता है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव। So it's already 30 minutes. I'll take one or two more questions and then we'll wind it up. So, answer writing. Many people have this question of answer writing. See, mains में see, मैं सबसे बोलता हूँ prelims का थोड़ा डाइसी हो गया है, it's a bit dicey, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है from what they're asking या कैसे किस टाइप के questions आएंगे. So, but mains में I can tell you it's all about answer writing. The more you practice, the more you'll get marks in मेन. सो आंसर राइटिंग मैं कैसे करता था, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ मैं रहता था, एंड एवरी डे आई यूज्ड टू राइट. आप ये सोचोगे ना कि फर्स्ट आई कंप्लीट माय सिलेबस एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग, दैट विल नॉट हैपन. आई एम टेलिंग यू दैट विल नॉट हैपन. सो आपको अगर लिखना है ना, तो स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. जब आप सोचते हो कि हाँ मुझे लिखना चाहिए, don't think of this thing that first I'll complete this syllabus, first I'll complete this thing, then I'll start answer writing. So this is the basic funda of answer writing. And then the last question. So इतना तेज जा रहा है, I'm not able to say it. Strategy, self-doubt, time management. These are all questions, see, which you'll have to sort yourself out. That is the only thing. Self-doubt का आप अब जब करने लगते हो ना, it's not your self-doubt. It's what the people feel about yourself. The group of people who are around you makes you feel that is self-doubt. मेन हो जाता है. आप फेलियर हो, आप फेल होते हो, there are 10 people who will say that आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर सकते, and this that. Trust me, self doubt तभी arise होता है. तो don't keep the company of those people. And see, people who are very critical, और ये जो उस टाइप के लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए. Have a group of people who are positive, जो कि आपको strength दे सके कभी. तो self doubt की situation arise नहीं होती है. So that's all. Already 32 minutes. Thank you everyone for attending my session. And बहुत short notice पे ये सारी चीज़ें हुई. I was busy blog पे, तो मैं अच्छे से presentation भी नहीं बना पाया. जो मेरे points आए, मैंने सोचा I'll share those things, जो भी मुझे लगा कि आप लोगों से share करना चाहिए. क्योंकि क्रैकिंग इट अमिड्स ऑल ऑड्स, ये बहुत जनरल टॉपिक था. आई थॉट कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फील्ड का या उसका. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू, बताने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम आई कैन नॉट से everything in front of you. So thank you everyone, thank you, and कभी we'll see some other time on some other platform, कभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा. Thank you.